Hello and good morning everyone. Myself Dr. Anshu Priya, and today before starting my topic I'd like to say happy World Physiotherapy Day to all the young physios. So my topic which I really wanted to speak about is ICU management of head injury, especially in the field of physiotherapy. So before going through the management, I'd like to explain what are all the basics related to हेड इंजरी. हेड इंजरी है क्या, उसके टाइप्स क्या होते हैं. So head injury is any trauma to the scalp, skull or brain. So एक minor bump से लेकर के आपका serious accident भी head injury cause कर सकता है. So it can be either closed type or open type. I'll show you the figure. This is the closed type of head injury. You can see skull, which is not penetrated by any object. When our skull or scalp is not penetrated by any object during the hitting of the head to any wall or anything, so that time we will say it is a closed type. There will be a trauma inside our brain. Maybe it affect our neurons, so maybe affect our lobes, but if the objects will not penetrate our skull, will not affect our skull. So this is called a type which is closed type of head injury. And so opposite of this is the open type. In other words, we can say it penetrating type of head injury. So जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे स्कल या स्कार्प को पेनिट्रेट करता है, उसे ब्रेक करता है और ब्रेन के अंदर इंटर करता है, तो उसे हम ओपन टाइप ऑफ हेड इंजरी कह सकते हैं. सो ये बेसिकली हमारा जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं, ब्लास्ट एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो उन सब इंसिडेंट के वक्त ओपन टाइप ऑफ इंजरी होता है. और क्लोज टाइप आप जब कोई इन्फेंट को आप बहुत शेक करते हो तो उनका ब्रेन अफेक्ट होता है जो हमें नहीं पता होता है, तो और दैट कैन डिस्टर्ब द ब्रेन फंक्शन. सो दैट kind of injury is called closed type of head injury. Now, what are all the causes? The causes can be different types, like violent blow or jaw to the head or body, any object that penetrates brain tissue such as bullet, shattered piece of skull. ठीक है, shattered piece of skull means जब skull के fracture हो जाते हैं, उसके कोई भी piece अगर penetrate कर गए हमारे brain को, that can leads to head injury. ठीक है, और shaking of infants मैंने कहा था ना, that can come under close type of head injury. Got it? So another causes like motor vehicle accidents, in falls, sports related accidents like falls from bed or ladder, stairs, ठीक है, छत पर से गिर गए, हेड इंजरी हो गई. देन व्हीकल रिलेटेड कॉलिजन्स that involves car, motorcycles और बाइसाइकल्स. देन वायलेंस जिसमें गन शॉट हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, चाइल्ड अब्यूज़, हम उन्हें मारते हैं जो भी स्टिक से भी मारते हैं तो उन्हें हेड इंजरी हो गई. और स्पोर्ट्स इंजरी में देयर इज़ अ टर्म कंकजन. जब हम खेलने के दौरान हेड जो है किसी अदर इन स्पोर्ट्स पर्सन के नी से टकरा गए, उस वक्त हेड इंजरी हो गई. और आपने फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर थे जिनका आपने सुना होगा, that was his head was hit by the ball during cricket, so he got fainted that time and head injury caused, and he is no more that time. So that comes in the head injury causes. So another cause is explosive blast injury. This basically blast है mainly happen to military personnel. So जब blast होती है तो दो तरीके से होता है. जब बहुत ज़्यादा जोर का blast होता है तो उससे जो frequency आती है, intensity आती है, that significantly disrupt the brain function. And सेकेंड वे में जब कोई ब्लास्ट होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस वक्त हिट कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं ब्रेन को, तो दैट टाइम ऑल्सो दैट लीड्स टू ब्रेन इंजरी और हेड इंजरी. ठीक है,
So other types are hematoma or hemorrhage. So hematoma क्या कह सकते हैं? Collection or clotting of blood which is outside the blood vessels obviously. So clotting होगी तो blood brain के किसी भी area को अगर वो pressurize करता है तो उस area का जो particular function है वो that will be hampered. ठीक है? That can lead to loss of consciousness or permanent brain damage also. And second one is hemorrhage. Hemorrhage क्या हुआ? Uncontrolled bleeding. Uncontrolled bleeding अगर around your brain it is happening, then it is called as subarachnoid hemorrhage. If bleeding is within your brain tissue, then it is called intracerebral hemorrhage. Huh? Now, conclusion, edema, skull fracture, diffuse axonal injury. Conclusion, I had already explained no sports related activities may mostly happen. और edema as you know swelling अगर होगा तो pressure cause करेगा ठीक है और skull fracture हुए तो उसके जो debris है जो उसके objects या फिर स्कल के हमारे कोई टुकड़े अगर पेनिट्रेट कर गए दैट कैन लीड टू हेड इंजरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी इसे हम दूसरे शब्द में शेयर इंजरी भी कहते हैं दैट डजेंट कॉज ब्लीडिंग बट ब्रेन का एक्सीलरेशन और डिसिलरेशन हमारे फंक्शन को हैम्पर कर सकता है दैट कैन लीड टू परमानेंट brain damage and even death. This is the most dangerous types of head injury. Okay, so if it comes to the symptoms, so whatever part is affected, that particular function related to that part will get hampered. As you know how physiological functions every lobes of our brain are performing. So physical symptoms will be like loss of consciousness, vomiting होगी, headache होगी, nausea होगा, sleeping difficulty होंगे, dizziness. हाँ, then अगर हम cognitive में जाते हैं तो profound confusion, slurred speech, then coma. So if we talk about the diagnosis, so I'm explaining about the ICU management. So that time I will explain what diagnosis and assessment you can take during ICU treatment. Okay, so first and foremost diagnosis for the ICU patient, we are taking Glasgow coma scale. It mainly for the stroke related cases, TBI, which are all in the ICU. हाँ, सो ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है? ये 15 पॉइंट स्केल्स होते हैं जो कि असेस करने में हेल्प करते हैं सीवियरिटी ऑफ अ ब्रेन. ठीक है, सो इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सेज हम पेशेंट्स के देखते हैं? आइज, वर्बल, मोटर रिस्पॉन्स. सो टोटल 15 में इफ the scoring is between 13 to 15, then it is mild. If the scoring is between 9 to 12, then it is moderate. And if it is less than equal to 8, then the case is severe. Okay? Now, imaging test, we are taking like CT scan, MRI, intracranial pressure monitor. Now, the most important part, especially for us, we physiotherapists, that is assessment. Assessment part is very much important when you are going to treat your patient. You will be able to know the severity of the patient. अगर mild case में आप ये सॉरी इफ सीवियर केस में आप माइल्ड केस वाले रिहैबिलिटेशन टेक्निक दे रहे हो लाइक पूरा रेंज ऑफ मोशन करा रहे हो उन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हो दैट कैन वर्सन द इफेक्ट. सो हमें असेसमेंट बहुत ही अच्छे से लेना होगा स्पेशली इन द केस ऑफ head injury, especially in the ICU patients. ठीक है, so in TBI, that is traumatic brain injury, the most important assessment scale we are using and it is being used widely in our medical field, that is रेंचोस लॉस अमीगोस स्केल. गॉट इट. सो ये आज के डेट में बहुत यूज़ हो रहा है. सो इन along with Glasgow coma scale, we are taking Rancho's Los Amigos scales also. It will help to know the patient's state of consciousness.
as well as their reliance on assistance to carry out their cognitive and physical function. uh, हम ये जानने में हेल्प करता है कि हम अब उस पर अच्छे से रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, क्या वो सपोर्टिव है मेंटली, नहीं है तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं. There are different levels of Rancho's Loss Amigos scale. So RLA का पहले 8 स्केल्स थे, जिसमें लेवल 1 जो है वो लोवेस्ट लेवल ऑफ फंक्शन मीन्स नो रिस्पॉन्स, नो कॉन्शियसनेस, और लेवल 8 हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शन शो करता था. But after that it is being revised. Now it is called as Rancho's Los Amigos revised scale, और इसमें 10 scales होते हैं. ठीक है. So these are the levels, different level. So you can see that level 1, 2, 3, these all comes under the severity, severity of the case. That is, it is being more severe. The case and the patient is having no response if it is level 1. Level 2 generalized, level 3 localized response. Localized response means आप उन्हें कोई स्टिमुलाई दे रहे हो और वो नॉन पर्पसफुल बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब कि बिहेवियर मीन्स पेनफुल स्टिमुलाई, वो झटका मार रहा है, वो कुछ भी मतलब कि आपके हाथ झटका. You can see that level 1, 2, 3 these all comes under the severity, severity of the case. That is, it is being more severe. The case and the patient is having no response if it is level 1. Level 2 generalized, level 3 localized response. Localized response means आप उन्हें कोई स्टिमुलाई दे रहे हो और वो नॉन पर्पसफुल बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब कि बिहेवियर मीन्स पेनफुल स्टिमुलाई, वो झटका मार रहा है, वो कुछ भी मतलब कि आपके हाथ झटका मारे, वो पेनफुल स्टिमुलाई पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं. सो दैट टाइम लोकलाइज रिस्पॉन्स. देन मॉडरेट केस में हम लेवल 4 से स्टार्ट करते हैं. सो कंफ्यूज एजिटेटेड, एजिटेटेड मीन्स चिड़चिड़ापन रहेगा, नॉन पर्पसफुल बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है, हाइपर एक्टिव स्टेट होंगे, इंटरनल कन्फ्यूज़न होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होंगे. आप उन्हें कोशिश करेंगे बोलने की, बट वो चिड़चिड़ा कर आपको शायद कुछ बोल दे, आप पर हाथ उठाने की कोशिश करे. एंड द लेवल 5 इज कंफ्यूज इनअप्रोप्रिएट नॉन एजिटेटेड, जिसमें सिंपल कमांड्स को ये अगर वो समझ रहे हैं देन दे विल फॉलो, बट अगर आपने उन्हें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कमांड्स देने की कोशिश की तो वो शायद नॉन पर्पसफुल बिहेवियर शो कर सके. So level 6 also comes under moderate case like confused appropriate, जिसमें confused होंगे, कोशिश करेंगे वो जानने की, brushing teeth, washing face, ये सब करने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल वो अवेयर नहीं रह पाएंगे थोड़ा बहुत अपने सिचुएशन को लेकर के कि उनके साथ हो क्या रहा है. हाँ, कोशिश करने करने की कोशिश जानने की कोशिश करेंगे, बट still they will not be aware of their situation. Level 7, 8 and लेवल 7 और 8 भी मॉडरेट के केस में आते हैं, बट बेसिकली 8th लेवल से माइल्ड केसेस में स्टार्ट होने लगते हैं, सीवियरिटी थोड़ा कम होने लगती है, पेशेंट अपनी कंडीशन को जानना स्टार्ट करते हैं कि हाँ उनके साथ ये हुआ, दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर नॉट एबल टू वॉक. ठीक है. सो अगर हम उस वक्त उन्हें कुछ मेमोरी याद कराने की कोशिश करें, दे विल सपोर्ट. ठीक है. they will try to complete their task. ठीक है. सो डिफरेंट इन्वायरमेंट के बारे वो जानने की कोशिश करेंगे, प्लेस के जानने प्लेस के बारे जानने की कोशिश करेंगे, मेमोरी रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. So here comes the most important part of our today's topic, that is the management part. So before going through the management, what are all the aims
uh, aims of the physiotherapy during ICU management of the patient. So physiotherapy employed both in the acute and chronic stage. So here I'll talk mostly about the acute stage. सो एक्यूट स्टेज जो है वो आईसीयू में ही होता है. फिजियोथेरेपिस्ट जो है अलॉन्ग विद मेडिकल एंड नर्सिंग टीम विल वर्क. The most important part is documentation. Proper documentation should be gone. Proper positioning is there or not. They should ensure the proper vital signs are there or not. हाँ, so ये सब documentation होनी चाहिए. That is most important. Then after रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या है, हम उन्हें कौन सा ब्रीदिंग टेक्निक्स दे सकते हैं, हाँ स्टिमुलेशन दे सकते हैं, ये सब. So what are all the treatment techniques? Stimulation दे सकते हैं for the level of alertness, हाँ via multifactorial modalities. So मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि स्टिमुलेशन देते वक्त हम शरीर पर तो दे सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये ध्यान रखना होगा अगर वो लेवल 1 2 3 के केसेस से आ रहे लेके, देन नेवर एवर स्टिमुलेट द फेस ऑफ द पेशेंट, क्योंकि वो शायद उस वक्त विथड्रॉ करे, फेस में झटका ले, तो उससे उनकी ब्रेन इंजरी और भी वर्सन केस में जा सकती है, वो डेथ भी हो सकता है. सो नेवर एवर स्टिमुलेट द फेस ऑफ द पेशेंट. हाँ, देन आफ्टर हम उनका पॉस्चरल कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी पोजिशनिंग चेंज कर सकते हैं. डीवीटी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पोजिशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बेड सोर्स ना हो, उन बेड सोर्स से हमें उन्हें बचाना है. देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हमें वाइटल्स चेक करने, सैचुरेशन इज डाउन, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नॉट सो मच ऑफ हार्श टाइप, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुड बी गिवन टू द पेशेंट. एंड हाँ, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ताकि हम फर्दर कंट्रैक्चर से उन्हें बचा सके, स्पास्टिसिटी से प्रिवेंट कर सके. एंड देन हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें सिर्फ फिज़िकली मेंटली ये सब से ही रिहैब नहीं करनी, हमें सोशियो इकोनॉमिक रिहैब भी करना होता है. विच मीन्स यू शुड एजुकेट द फैमिली एंड केयर गिवर ऑफ द पेशेंट, क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि हमें उनका फेस नहीं स्टिमुलेट करना है, हमें उनसे ये बातें नहीं करनी, हमें उनसे वो बातें नहीं करनी है, उनको ऐसे नहीं टच करना है, बट फैमिलीज़ को नहीं पता होता है. तो हमें उन्हें एजुकेट करना होता है कि अगर आप ऐसे डायग्नोस कर, पेशेंट का डायग्नोसिस ये है, हमें उन्हें ये मैनेजमेंट दे रहे हैं, तो आप अगर ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो आप प्लीज़ स्टिमुलेट ना करें, उनके फेस को टच ना करें. हाँ, बट ट्राई टू रिकॉल हु यू आर टू देम. मीन्स उनसे बातें ज़रूर करें कि आप कौन हो. आप फ़ोटोज़ ही दिखाने की कोशिश करें ताकि उनका मेमोरी रिटेंशन हो. उन्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, एजिटेटेड होंगे, बट दे विल ट्राई टू रिमेंबर. ठीक है. सो दीज आर ऑल द सेम थिंग्स. सॉरी. हाँ, सो रिडक्शन ऑफ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट और कंट्रैक्चर प्रिवेंशन. ठीक है. सो नाउ nowadays, this is CIMT. So CIMT is basically used in the ICU management of the stroke patient, TBI patients. Now, so in this, what is CIMT? That is constant induced movement therapy, जिसमें unaffected part को हम restrict करके रखते हैं और affected part से movement कराने की कोशिश करते हैं. हाँ, so this is the CIMT going on in the ICU. So if we will talk about the latest advanced technique, so here comes the virtual reality, which is the artificial intelligence based technique, जिसमें जो ICU patients में आज के डेट में यूज़ हो रहे हैं, and that helps to improve the patient's cognitive state. Cognition improve होगा तो memory improve होगी, memory improve होगा तो sensation जगने की कोशिश होगी, तो virtual reality is being used. So these are all the things which I wanted to share to you all. So thank you so much, and yeah, happy World Physiotherapy Day again. Thank you so much. Which I am going to speak, which I